Hello dear students, welcome to your own channel. This is Dr. Varsha. Today we will focus on cell cycle. This portion is taken from second unit of cell biology. Cell cycle is the duration between one cell division to the next. And cell division is very much necessary for growth and multiplication of any multicellular organism. Cell division is a process of cell multiplication in which a cell enlarges in size and undergoes division to form daughter cells. And the cell cycle is a series of changes that occur in a newly formed cell during its growth and division to form two daughter cells. And the concept of cell cycle was given by Howard and Pelc in the year 1952. तो किसी भी सेल के ग्रोथ के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेल डिवीज़न होता है और एक सेल डिवीज़न से दूसरे सेल डिवीज़न के बीच में जो पीरियड होता है उसको सेल साइकिल कहते हैं। और सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में हार्वर्ड और पेल्क ने 1952 में बताया था और प्रपोज किया था कि इसके अंदर 4 डिफरेंट steps होते हैं. And nowadays cell cycle consists of 3 steps: interphase or I phase, second is karyokinesis or M phase. Karyokinesis is the division of nucleus, and third is cytokinesis or D phase. Cytokinesis is the division of cytoplasm. And there is another phase that is called G0 phase, and G0 phase is the phase in which cell comes out of the cell division and undergoes differentiation to take up a particular structure or physiological function in the body. इसका मतलब G0 phase वो होती है जब सेल साइकिल में से सेल बाहर निकल आता है, सेल डिवीजन नहीं करता है, मेच्योर हो जाता है, परमानेंट हो जाता है और वो प्रॉपर किसी स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है. उसको कहते हैं G0 फेज. कुछ सेल ऐसे होते हैं कभी कभी वापस सेल साइकिल में एंटर कर जाते हैं, लेकिन एक बार वो मेच्योर हो जाता है तो वो फिर वापस सेल साइकिल में एंटर नहीं कर पाता है. And the first phase of cell cycle is interphase. This is also called resting phase, and the interphase may be defined as the time interval between the one mitotic division until the start of the next division, and in this period cell prepare themselves for the next division. तो इंटरफेज जो होती है वो रेस्टिंग फेज होती है. एक जो सेल डिवीजन करके नेक्स्ट में जब सेल डिवीजन में सेल जाता है उसके बीच में उसको एक रेस्टिंग पीरियड मिलता है, उसको इंटरफेज कहते हैं. और इस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है नेक्स्ट डिवीजन में जाने के लिए. सो द इंटरफेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 stages. Number 1 is G1 phase. This is also called gap 1 phase or growth 1 phase. Second is S phase. S phase is synthetic phase, that is DNA synthesis phase. And the third one is G2 phase, that is also called second gap phase or second growth phase. Now first is interphase or resting period. उसमें हम पढ़ेंगे first G1 phase. अब बहुत सारे चेंजेस होते हैं जीवन फेज में जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि उसने सेल डिवीजन करना है. तो फर्स्ट इज इट इज द इनिशियल ग्रोथ ऑफ न्यूली फॉर्म सेल इन विच सेल एक्यूमुलेट द केमिकल एनर्जी एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डीएनए सिंथेसिस. सेल ग्रो इन साइज, न्यूक्लियस ग्रो इन साइज, एंड अ लार्ज पूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड, energy rich compounds like ATP are produced, and at the close of the G1 phase rapid synthesis of RNA and protein is found, and different cell organelles like mitochondria and chloroplasts, they multiply because they are semi-autonomous in nature. They have their own
DNA, so they can multiply themselves. And endoplasmic reticulum, Golgi bodies, ribosome, etc., they are produced. And G1 phase is absent in lower eukaryotes like amoeba, proteus, and it takes around 30 to 50% of the total time of the cell cycle. And cell that are going to divide must pass a test. This is called checkpoint. So cell has to pass this checkpoint of G1 phase. This is also called G1 checkpoint. And cell must be big enough and have plenty of nutrients and have undamaged DNA. तो जीवन फेज जो होती है उसमें आरएनए की और सबसे पहली बात है कि अपने आप को सेल प्रिपेयर करता है डीएनए सिंथेसिस के लिए और अपने अंदर एक बड़ा सा पूल बनाता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स और एटीपी जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड है उसको अपने अंदर एक्यूमुलेट करके रखता है. न्यूक्लियस और सेल का साइज धीरे धीरे लार्ज होने लगता है और इसमें रैपिड डीएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो जो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी प्रोड्यूस होना शुरू कर देते हैं. बट ये लोअर यूकैरियोट्स जो होते हैं उसमें जीवन फेस नहीं होती है. और जीवन एक चेक पॉइंट भी है और इस चेक पॉइंट को सेल को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है कि उसमें वो सेल अपने आप को देखता है कि वो प्रॉपर उसमें न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ है कहीं. तो इस चीज़ को ये इसमें ये अपने आप को देखते हैं. नेक्स्ट वन इज दिस इज द पिक्चर ऑफ सेल साइकिल. नाउ यू कैन सी द different phases of cell cycle. This phase, this is very long phase. This is I phase or this is interphase. And this one is M phase or mitotic phase. This is also called karyokinesis. Karyon means nucleus. This is the division of the nucleus. And this cytokinesis is the D phase. This is also called cytokinesis. And this is G0, G0 phase in which the cell comes out from the cell cycle and it become permanent and cell differentiation takes place and cell perform proper physiological function. So this is the I phase and at the bottom of the picture you can see I phase. This is interphase and I phase is differentiated into three parts. This one is G1 phase, this is S phase and this is G2 phase. So I phase या interphase उसके तीन पार्ट है. G1 को फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं. In G1 phase synthesis of RNA, protein takes place and the pool of ATP, nucleotides, amino acids are produced. ATP produced in large amount and in plant cell centrioles are replicate. In animal cell centrioles are replicate. So these changes takes place in the G1 phase and this is S phase or this is also called synthetic phase and in which the replication of DNA takes place, synthesis of histones protein and the replication of chromosomes and the nucleus enlarges in size. These changes takes place in the S phase and this is the second growth phase. This is also called G2 phase in which the synthesis of RNA and protein continues and biomolecules like proteins are produced for the spindle formation, organelle formation takes place and cell metabolically become active, duplicates its cell organelles. So cell organelles जितने हैं वो डबल होना शुरू कर देते हैं. This is M phase. तो पूरी ये I phase है जिसमें तीन phase है. Next is M phase. M phase is the division of the nucleus. This is also called mitotic phase in which four phases are found: prophase, metaphase, anaphase and telophase. मतलब mitosis यहाँ होती है. और नेक्स्ट इज डी फेज और साइटोकाइनेसिस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. सो नेक्स्ट इज एस फेज. अभी हमने G1 फेज पढ़ी. नेक्स्ट इज एस फेज. इन एस फेज क्रोमोसोमल और डीएनए रेप्लिकेशन इज फाउंड एंड द प्यूरिन्स एंड pyrimidines bases are incorporated into nuclear DNA and histones are also synthesized. And the next one is the chromatic areas replicate earlier than the heterochromatic areas. And S phase has special
S phase has chromatin fibers become replicated. In the S phase, chromatin fibers replicated, DNA contains double. That means ki diploid cell which is 2n now become tetraploid, that is 4n at the end of the S phase, and each chromosomes comes to have chromated fibers. Both the chromated fibers are attached at the point. That point is called centromere. And S phase is also called invisible phase of mitosis. In the phase, chromosomes prepare themselves for equitable distribution later on. And in the animal cells, centriole pair is also replicate. So centrosomes are produced in the case of animal cell. This is called S phase, जिसमें DNA replication. इसको हम synthetic phase इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें DNA replication होता है, स्टोन बनता है, क्रोमेटेड फाइबर्स बनते हैं. सबसे बड़ी बात है DNA डबल हो जाता है, क्रोमोसोम्स डबल 2n जो सेल है वो 4n सेल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डबलिंग ऑफ द DNA कंटेंट्स, ये होता है इसके अंदर. Next is G2 phase. This is also called second growth phase or pre-mitotic gap phase और post synthetic phase भी बोल सकते हैं आपको. इसमें RNA and protein synthesis continue, जो कि जीवन में ही शुरू हो गई थी, and macromolecules are produced for the multiplication of mitochondria, plastid, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, etc. Protein is produced for the spindle formation, and in this phase cell prepare itself for the cell division and it enlarges in volume, and in this cell special cells are found. These are called reserve cells, and these reserve cells are very useful in quick healing of the wound or cuts by their immediate division and multiplication. And inside the vesicles membrane are stored, and entry of the G2 phase, M phase. Into M phase, some phosphorylation of the H1 histones of chromatin fibers are also found, and in order to enter the cell division, cell must pass the G2 checkpoint, and the G2 checkpoint tests whether the cell copied all the chromosomes correctly or not, and if they can't pass the G2 checkpoint, they remain in G2 and try to repair themselves. And so G2 phase में क्या होता है कि RNA और प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू रहती है और बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, जिससे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं सारे उनकी डबलिंग हो जाती है, सेल का साइज और बड़ा हो जाता है. इसमें एक स्पेशल सेल्स भी पाए जाते हैं जिसको कहते हैं रिजर्व सेल्स. ये रिजर्व सेल्स बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि अगर कोई हीलिंग है, वुंड है, तो वो जल्दी इमीडिएट सेल डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और उसको हील कर देते हैं. वुंड जो है, जो कट लगा हुआ उसको फौरन हील कर देते हैं. और जो वेसिकल्स होती हैं, ये वेसिकल्स ER से या गोल्जाई अपरेटस से रिलीज होती है. इनमें मेम्ब्रेन का मटेरियल स्टोर हो जाता है और इस फेज के अंदर जो है H1 हिस्टोन्स का जो है उसका फॉस्फोराइलेशन होता है. और सेल को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल को कि ये G2 चेक पॉइंट, जैसे G1 चेक पॉइंट होता है वैसे G2 चेक पॉइंट होता है, उसको पास करे. और सेल उस समय सेल जब चेक पॉइंट से निकलता है तो उसमें ये देखा जाता है कि उसने प्रॉपर क्रोमोसोम्स को करेक्टली डबल किया है कि नहीं, मतलब जो कॉपी हुई है उसकी मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो प्रॉपर उसने ठीक से कॉपी किया है कि नहीं. उसको अगर कहीं डैमेज है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखते हैं. तो अगर वो उसने G2 चेक पॉइंट को पास नहीं किया है, सेल नहीं कर पाता इस चेक पॉइंट को, तो उसको G2 में ही रहना पड़ता है जब तक वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर लेता. अगर DNA रिपेयर नहीं है तो उसको रिपेयर करता है वो, और करीब 1 to 4 आवर्स इस फेज को कंप्लीट होने में लगते हैं. नेक्स्ट नंबर 2 इज कैरियोकाइनेसिस और एम फेज. कैरियोकाइनेसिस जो है इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. दिस इज द फेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन विच इन्वॉल्व्स द डिफरेंशिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देयर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइटोसिस. And karyokinesis, it is further divided into 4 steps: prophase, metaphase, anaphase and telophase.
In the prophase, chromatin fibers found the condensation of the chromatin fiber takes place, chromosome formation takes place. In Anaphase, chromosomes are arranged on the equatorial plate. In Anaphase, chromosomes moves towards the poles, and in Telophase, they reach to the poles, and a new nuclear membrane nucleolus is produced. So Anaphase is the brief phase, while prophase is the longest phase. And the next third is cytokinesis or D phase. Cytokinesis is the division of the cytoplasm. Karyokinesis is the division of nucleus, and cytokinesis का मतलब होता है division of the cytoplasm and of a cell into two daughter cells. And in plant cell, it is completed by the formation of cell plate, whereas in animal cell, cytokinesis occurs by cleavage. And tubules from the endoplasmic reticulums are released, and the vesicle from the Golgi apparatus are released. They both are containing the wall material, and this wall material is deposited in between the cell. जो cell दो divide हुए हैं उसके बीच की जो place होती है वहाँ पर ये जो material होता है cell wall formation का वो वहाँ पर स्टोर होना शुरू हो जाता है. एंड द वेसिकल्स फ्यूज टूगेदर, वेसिकल्स membrane from the new plasma membrane for each cell, and the wall material joins together to form the cell plate, and the two new cells then secrete cellulose and other material to build a primary cell wall on either side of the cell plate, which is now called the middle lamella. So cell plasma membrane, cell wall, and the middle lamella is produced. Now you can see the picture, and these are the two adjacent cell, and this is a middle lamella which is found between the two cell, and दोनों तरफ middle family के primary wall होती है और दोनों तरफ जो secondary wall होती है. Secondary wall is multi-layered, and आप देखो इसमें S1, S2, S3, तो ये जो layers form हुई हैं सेल, दो सेल के बीच में ये लेयर फॉर्म होगी, और वो सारा मटेरियल वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स जो ईयर से निकले हैं और वेसिकल्स जो गोल्जाई apparatus से वो कैरी करके सारा मटेरियल निकलती है. सेलुलोज बाद में रिलीज होता है और बीच में एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है. नाउ आफ्टर सेल साइकिल, regulation of cell cycle. Cell division is very important for the growth and development of the organisms, but it required in controlled way. Cell division के बिना कुछ नहीं हो सकता. Cell का multiplication, growth सब कुछ cell division से होती है, लेकिन एक controlled way में उसकी ज़रूरत होती है. उसका control बहुत ज़रूरी होता है, उसका regulation. अगर ऐसे ही continuous cell divide होते रहेंगे तो वहाँ ट्यूमर बन जाएगा, कैंसरस सेल फॉर्म हो जाते हैं. इसलिए regulation of cell cycle is very much necessary, and some regulatory mechanism in the dividing cells are found, and these regulatory mechanisms are called checkpoint, and which are located in the cell cycle. And there are three checkpoints in the cell cycle. G1S checkpoint, which is found between the G1 and S phase. G2 M checkpoint, which is found between the G2 and M phase, and spindle or M checkpoint, and this is found between the Metaphase and Anaphase. So during the regulation of the cell cycle, three checkpoints are found, and the control mechanism involves successive waves of cyclin dependent kinase. This is also called CDK activity leading for phosphorylation of the certain protein. And if the checkpoint mechanism detects problem with the DNA, and the cell cycle is stopped, and the cell attempt to either complete the DNA replication or repairing the damaged DNA, and if the damage is irreparable, and the cell may undergo apoptosis, and this is the प्रोग्राम ऑफ सेल डेथ. तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल में कंट्रोल्ड वे होती है, उसमें चेक पॉइंट बने होते हैं पूरे साइकिल में, और ये तीन चेक पॉइंट होते हैं. G1S चेक पॉइंट, G2M चेक पॉइंट और M चेक पॉइंट. थर्ड वन इज M चेक पॉइंट, और ये सब कंट्रोल CDK करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम.
और वो CDK जो साइक्लिन है वो हर चेक पॉइंट पर होता है, वो चेक करता है। और अगर चेक पॉइंट में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है कि इस सेल में कोई DNA डैमेज है या रेप्लिकेशन ठीक से नहीं हुआ है सेल का, तो सेल को वापस अपना DNA का रेप्लिकेशन करना पड़ता है और रिपेयरिंग करनी पड़ती है डैमेज DNA की। और अगर वो इरिपेरेबल होता है, मतलब उसकी डैमेजिंग ठीक नहीं हो सकती है, तो एपोप्टोसिस एक प्रोसेस होती है, उसमें सेल अपने आप को प्रोग्राम करता है सेल डेथ के लिए, सेल अपने आप को किल कर लेता है। तो ये रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल होता है। Now you can see the picture. This is cell cycle, different stages of cell cycle, and this is interphase, which is further divided into G1, S and G2 phase. And S phase में वही DNA synthesis, G1 में preparation होती है, enlarge करता है cell और अपने आप को और बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। G2 फेज में भी वही चेंजेस होते हैं। और M फेज में 4 स्टेजेस जो माइटोसिस की हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होती है। लेकिन यहाँ पर चेक पॉइंट है, आप देखो ये पूरा एक साइकिल है और साइकिल के बीच में यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है, यहाँ एक बैरियर है और यहाँ एक बैरियर है, तो इसको कहते हैं चेक पॉइंट। ये G1 चेक पॉइंट है विच इज फाउंड बिटवीन द G1 एंड S phase, and this is G2 check point which is found G2 and M phase, and this is M check point which is found in the M cycle. This is also called metaphase. It is found between the metaphase and anaphase. तो जो check point G1 check point है वो क्या check करता है? G1 check point will check for the cell size, nutrients, growth factors and DNA damage. तो ये check करता है कि सेल का साइज ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, सेल की ग्रोथ ठीक से हुई है कि नहीं, और दूसरा DNA कोई डैमेज तो नहीं है, उसको चेक करता है। अगर यहाँ से ये पास कर लेता है सेल साइकिल तो फिर ये S फेज में एंटर कर जाता है। और फिर उसके बाद S फेज कंप्लीट करके G2 चेक पॉइंट होता है दूसरा। वो G2 चेक पॉइंट के अंदर सेल विल चेक दैट DNA इज डैमेज और नॉट, DNA रेप्लिकेशन प्रॉपर है कि नहीं और DNA डैमेज तो नहीं हुआ है। थर्ड चेक पॉइंट इज स्पिंडल चेक पॉइंट, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड M चेक पॉइंट, इन विच सेल चेक फॉर द क्रोमोसोम अटैचमेंट टू द स्पिंडल एट मेटाफेज प्लेट। वो चेक करते हैं कि जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है, इसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, उसके ऊपर क्रोमोसोम प्रॉपर स्पिंडल फाइबर से अटैच हैं कि नहीं। तो ये तीनों चेक पॉइंट्स होते हैं। अगर इन चेक पॉइंट्स पे क्लियर करके सेल अगर इससे पास हो जाता है तभी वो नेक्स्ट सेल में सेल डिवीजन होगा, अदरवाइज सेल डिवीजन नहीं होगा। उसको प्रॉपर अपने डैमेज DNA को रिपेयर करना पड़ेगा। DNA रेप्लिकेशन अगर इनकम्प्लीट है, ठीक से कॉपी नहीं हुई, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स नहीं बने तो बनाने पड़ेंगे, और सेल ऑर्गेनेल्स की डबलिंग नहीं हुई है उसको देखना पड़ेगा। उसके लिए उसकी वहां पर वो उसी फेज पर वो रुक जाता है और अपनी रिपेयरिंग करता है। और अगर वो इरिपेरेबल होता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप को जो है रिपेयर नहीं कर पाता है, तो फिर एपोप्टोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें सेल अपने आप को किल कर लेता है। सो दिस इज रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।